भगवत गीता में कहानी लोग को गलत फहमी है कि बाइबल में लिखे है शादी करो। मैंने बाइबल पढ़ चुका हूँ, कहानी लिखी है, भगवत गीता में कहानी लिखी है, कहता है अब बाइबल में दिखाओ। मैं तो बाइबल कई बार पढ़ चुका हूँ, किधर नहीं लिखा। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे दिखलाओ कि कहाँ पर लिखा है एक बीवी के बारे में। वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया, और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बना। In the Minoan Palace at Knossos, the Monteleone chariot, an Etruscan artifact dating back to 530 BC. It was discovered in 1902 at Monteleone di Spoleto in Italy. The car statue was excavated in 1894, close to the pyramid of Amenemhat III. Bronze sculpture found in 1896 at the Sanctuary of Apollo in Delphi. The Korlek head, an ancient stone idol with 3 faces. Discovered in 1855 in the town of Drumig in Ireland. The Venus of Brasempui, a 25,000-year-old artifact made from ivory found in France in 1894. The Minoan snake goddess figurines discovered in 1903 in the Minoan. Egyptians, Part 1. Know that 4,700 years ago, the ancient Egyptians had a police force? Not only that, they had police dogs too. The ancient Egyptians also had what is believed to be the world's first zoo. It included a leopard, 2 crocodiles, hippopotami, hartebeest, 2 elephants, baboons.
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف طبقات میں پیدا کیا ہے. اس میں ایک طبقہ یتیم بچے اور بچیاں ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کو یتیم پیدا کیا. ان کے والد تو آپ ماں کے پیٹ میں تھے 2 مہینے کے جب ان کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ کا 6 ماہ کی عمر میں انتقال ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں یسألونک عن الیتامی ایک سوال قرآن میں اٹھایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. اور اللہ کے نبی کا فرمان، اور اللہ نے قرآن میں کہا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ یتیموں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ سختی نہ کرو، نرمی کا سلوک کرو. اور آپ نے فرمایا کہ انا مقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Stele. This stele was discovered during excavations of this 6,000-year-old ziggurat in Sardinia. And although we know a fair amount about this prehistoric site, there is something about this stele which was not immediately obvious to the naked eye. کیا تھا اس کی ویڈیو اندر سے دکھائیں گے انشاءاللہ، جو کہ میری زندگی کی خواب تھا دیکھنا. یقین کریں آج کی ویڈیو جو ہے نا یہ پورے میرے یوٹیوب سفر کی حیران کن ویڈیو ہے. بہت سی جذبات بھی آپ کے جو ہے چینج ہونے والے ہیں اور آپ کو بہت سی انفارمیشن بھی اس ویڈیو سے ملنے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں زبیر ریاض، مدینہ منورہ سے موجود ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاقوں میں، مصر میں، ایجپٹ میں، بازار مصر جہاں پہ ان کو بیچا گیا تھا، انہی کے آس پاس کسی علاقے میں موجود ہوں. سب سے پہلے درود و سلام. The first occasion
We believe they are referring to the time before the Great Flood, which caused widespread devastation. Before recently, the Great Flood stories were said to be non-scientific myths, but we've since found evidence from a period known as the Yunda Dryas, which proves otherwise. We found evidence of cataclysmic floods in North America, in the Scablands, and in the Black Sea, just south of Ukraine. The Great Flood stories around the world share remarkable similarities. It's a theme that is repeated many times in many cultures. In the beginning, after a great devastation, the earth was repopulated. Examples can be found in Babylonian, Hebrew, Egyptian, Buddhist, and Sumerian texts. We now think these were memories passed down through generations. Details of Zep Tepi are now starting to emerge of the first time when an advanced ancient civilization existed. In 2003, World, Jorg Fassbinder, the lead archaeologist, reported that they had discovered a mysterious building located just outside the city, in the middle of the former Euphrates River. The location of the building matched up to a story written thousands of years ago on Sumerian clay tablets. Fassbinder gave an interview with the BBC stating that he believed they had discovered the Tomb of Gilgamesh, a Sumerian king from nearly 5,000 years ago. The archaeologists had found garden structures and ancient houses, exactly as described in the epic. By 2005, the lack of security in Iraq led Fassbinder to believe it was no longer safe to continue excavating. He left the potential tomb buried before shortly leaving the country, and 20 years later, sure that this wasn't with chisels and hammers, but was it with some advanced ancient technology that we haven't found yet? Let's find out. Sorry about that, kids. I really wanted to present you with a laser beam or an alien body, but this will have to do. Now, we've just got to explain these bad boys. When Egyptian The inscriptions, the black granite, the style of artwork is all very recognizable. However, this is not ancient Egyptian. These artifacts are from Mesopotamia, from cultures such as the Sumerians and the Akkadians. Some of these dating back to over 4,100 years ago, around the same time as the ancient Egyptians. Their writing systems also look very similar indeed. Yet archaeologists would have us believe that these ancient civilizations were never in direct contact with each other. One of the main theories is they were just influenced by the same surroundings, and that they never crossed paths. And another is that despite their precision, these artifacts is made from blocks of basalt, and it features a staircase leading down to an underground chamber where the water is collected. Incredibly, the stones are perfectly fitted without the use of mortar, but that isn't even the most intriguing part of this ancient place. This mysterious well is precisely aligned with the moon, and specifically its 18.6-year cycle. During this cycle, the moon appears at its southernmost and northernmost points, and the well is aligned so that the moonlight illuminates the water. This precise alignment suggests that the Nuragic people had a level of astronomical knowledge and advanced engineering skills that goes beyond mere coincidence. Rising Mech Fortress was built approximately 1,500 to 2,000 years ago. While its existence has been known to locals for countless generations, it was the British explorer, John Still, who brought its wonders to the world's attention in the early 20th century. Sigiriya ascends to a height of 660 feet at the top of the rock. Iconic feature is the gargantuan lion paws, sitting there guarding the staircase leading up to the palace. Around 2,000 years ago, King Kasyapa, fearing treachery, decided to act on his paranoia and construct a palace on this colossal rock, transforming it into an impenetrable fortress. But the site itself is thought to have been home to humans for over 10,000 years. Archaeologists say it's a coincidence, but the ancient handbag, as it is now known, has quickly become a historical enigma, baffling scholars around the world. The mainstream narrative says that each ancient civilization developed
developed independently with little to no connection with each other. Yet the ancient handbag symbol has now been discovered in almost all ancient cultures. It first appears at Göbekli Tepe in Turkey, which dates back to 11,600 years ago. It also shows up in Mesopotamia, ancient Greece, ancient Egypt, and the Balkans. But strangely, despite the vast Atlantic Ocean and over 7,000 miles between them, the ancient handbag symbol appears in the Mesoamerican cultures, such as the Toltec, the Maya, and even the Olmec. Some people believe that this symbol represents a transference or handing down of ancient knowledge. Some even believe this could be a symbolic representation of some form of ancient technology. A local farmer near the city of Kashan in Iran was tending his land. As he was working in the fields, he accidentally stumbled upon an underground chamber entrance. He curiously uncovered the hole, and as he entered the chamber, he realized he had discovered a fascinating hidden world beneath the surface. What the farmer had discovered was the underground city of Nushabad, also known as Aui. This ancient subterranean complex is located near the city of Kashan in Iran. The exact construction period of this vast network of underground tunnels and shelters is not precisely known, but archaeologists suspect it dates back thousands of years. The fact we have discovered yet another underground city suggests our ancestors spent a lot more time underground than we first thought. It was thought to provide shelter and refuge to the Persian people. We found living spaces. Siberian village of Rajavchik in the Soviet Union, a remarkable event unfolded, seemingly ripped from the pages of a science fiction novel. Это работал какой-то разум, возможно, космический разум. Может быть, это наши предки здесь действовали очень давно, потому что на глубине 70 метров, примерно 800 миллионов лет или 600 миллионов лет, как ученые считают некоторые. It all happened deep beneath the Earth's surface, in the dimly lit tunnels of a coal mine. The miners there worked tirelessly, the same as they did every day, extracting coal at a depth of 230 feet. However, amid the rhythmic clanging of metal against stone, one miner's pickaxe struck something unexpectedly hollow, a sound distinctly different from the solid resistance they had grown accustomed to. Pausing, the miner wiped his face and, with a mix of curiosity and caution, cleared away the debris, revealing a crack in the wall that seemed to lead into darkness beyond. With a few more skilled strikes, the rock gave way, and the miners stood in awe as the wall crumbled, opening into a hidden chamber untouched by light for millennia. Inside, the air was thick. Inside, the air was thick with mystery, and their lamps casted a long shadow over a sight that would be forever etched into their memories. They saw a large marble sarcophagus of exquisite design, measuring around 8.5 feet in length and 3 feet in height. Immediately, the head of the mining district, Alexander Masaligin, received the bewildering report from one of his. Proved futile, however, as it was too heavy. They decided to drain the pink liquid into special containers that would be transported separately, making the sarcophagus lighter. When they did that, something astonishing happened. When the pink liquid was drained, the woman's perfectly preserved and lifelike body underwent a startling transformation. The skin changed from white to black in front of the onlookers in mere minutes, making the princess lose her lifelike appearance. This led many to believe that the pink liquid and the sarcophagus itself had some kind of preservation properties that could maintain her body in a state of suspended animation. The Tissot princess was eventually transported to Novosibirsk for scientific analysis. Several weeks later, a professor from Novosibirsk arrived in Rajavchik to lecture about the unusual discovery in the mine. He disclosed that the preservation state of the princess was unlike anything we encountered in the field of archaeology or paleontology. The liquid in which she was submerged had properties that defied explanation without any known parallel in natural or artificial embalming processes.
Efforts to understand the age and origin of the sarcophagus and its occupant led to an extensive series of tests, including radiocarbon dating and other analytical techniques. However, radiocarbon dating, a reliable method for determining the age of organic materials up to 50,000 years old, was inadequate for the task at hand. The material of the sarcophagus, along with the preservation liquid and the princess herself, did not conform to the expected parameters. Scientists turned to other methods, analyzing the geological strata and employing more sophisticated
me show you something which will blow your mind. If sound can levitate objects in this way, what else can it do? Using sound vibrations to oscillate this copper tube attachment, fixed in place by a wooden block, it can cut directly through granite, but that doesn't explain how they move those huge 80... detail. They discovered the holy well of Santa Crist. When archaeologists began to study the का वक्त दरकार होगा। मगरबी तहजीब का ये अकीदा है कि एक जिस्म बैक वक्त टाइम ट्रैवलिंग की तरह बहुत से मकामात पर मौजूद हो सकता है। साइंस भी आजकल जोश व खरोश से इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च कर रही है। साइंसदान और स्पेस एजेंसीज लाखों करोड़ों अरबों खरबों लाइट ईयर दूर खला में नित नई दरियाफ्तें कर रहे हैं। जदीद तरीन स्पेस क्राफ्ट होने के बावजूद हम वहां नहीं पहुंच सकते। साइंस का ये मानना है कि अगर वक्त और स्पेस आपस में मिल जाएं तो वक्त ठहर जाता है। इंसान टाइम ट्रेवल के जरिए किसी भी सैयारे पर सेकंड्स की रफ्तार से पहुंच जाएगा और ये कहा जाए कि ये फासिला चंद लम्हों या चंद मिनटों में तय हो सकता है तो ये एक गैर यकीनी सी बात लगती है। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक हमारे खला में बहुत से शॉर्टकट रास्ते मौजूद हैं। इन मुख्तसर तरीन रास्तों की मदद से लाखों खरबों लाइट ईयर का अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसा खौफनाक और पुरअसरार पहाड़ जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है। यार दोस्तों, ये वाकया एक ऐसे अजीबो गरीब पहाड़ का है जो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है, जहाँ जिन्नात, परियां और अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा दीगर खौफनाक मखलूकात आबाद हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोहे काफ पहाड़ क्या है और ये कितना बड़ा है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन कौन सी मखलूकात को पैदा फरमाया है और वो मखलूकात कैसी हैं, वो क्या खाती पीती हैं और वो लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, और कोहे काफ पहाड़ कहाँ पर है। क्या कोहे काफ पहाड़ की दुनिया हमारी दुनिया से अलग है, और क्या इस दुनिया की तारीख में कोई शख्स कोहे काफ पहाड़ की दुनिया में दाखिल हुआ या नहीं, और क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे काफ पहाड़ का जिक्र कुरान पाक में फरमाया है, और आज के इस दौर में कोहे काफ पहाड़ किस मुल्क में है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम कुरान पाक एक ऐसा कलाम है कि जिसके अंदर इस दुनिया कायनात के बहुत सारे राज पोशीदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर ऐसे बहुत सारे अल्फाजात का जिक्र फरमाया जिनके मानी और मतलब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला और उस काम की तरफ इशारा करता है जिसको हम कोहे काफ के नाम से जानते हैं। वैसे तो कोहे काफ पहाड़ के बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं जिनके अंदर जिन्नों, परियों और शहजादियों का जिक्र मिलता है, लेकिन इस पहाड़ की हकीकत कुछ और ही है। प्यारे दोस्तों, कोहे काफ पहाड़ के बारे में ये कहा जाता है कि इसका हजम और साइज इतना बड़ा है कि ये सातों जमीनों आसमान को घेरे हुए है और इसने पूरी दुनिया को अपने अंदर समा रखा है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के सूरह नबा के अंदर इरशाद फरमाता है, और हमने जमीन को फर्श बनाया और इसमें पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को पैदा फरमाया तो इसके नीचे पानी था जिसकी वजह से जमीन हिल, और हमने जमीन में पहाड़ बनाए कि वो इन्हें हिलने न दें, और हमने इनमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि वो राह पाएं। प्यारे दोस्तों, इस रुए जमीन में पैदा किए जाने वाले पहाड़ों में से सबसे बड़ा पहाड़ कोहे काफ का पहाड़ है। इस पहाड़ की जड़ें सातों जमीन के नीचे हैं और बाकी तमाम तर पहाड़ इस पहाड़ की शाखें हैं। लिहाजा ये पहाड़ जमीन की चारों तरफ फैला हुआ है और जमीन से बहुत दूर है, जहाँ पर जाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। और कोहे काफ पहाड़ की ये दुनिया अंधेरे के अंदर डूबी हुई है, जहाँ चांद, सूरज, सितारों का कोई तस्वुर ही नहीं, बल्कि इस पहाड़ की दुनिया अंधेरे की दुनिया है।
जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। प्यारे दोस्तों, कोहे काफ की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग अलग तरह की जिंदगी गुजारते हैं और इस दुनिया के अंदर अलग तरह की जिंदगी गुजारते हैं और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा अजीबो गरीब मखलूकात आबाद हैं। जैसा कि कोहे काफ की दुनिया का जिक्र हदीस पाक के अंदर कुछ यूं मिलता है। रिवायात में आता है कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबवी के अंदर हल्का बनाकर बैठे हुए थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे जी ये है जो ये तस्वीर नजर आ रही है, ये है क्या वो कुछ सुमेरियन टैबलेट्स थी जो यानी पुराना एंशियंट डाटा था वो सारा और एंशियंट साइट जो थी वो सारी की सारी अपने कब्जे में ले ली और इराक के कोई तकरीबन 30 PhD स्कॉलर्स थे जो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे, उनको तहे तेग कर दिया। तो आज की जो ये स्टोरी है ये थोड़ी सी इससे इस तरीके से लिंक है कि आज की जो स्टोरी है वो हम बात करेंगे बुक ऑफ इनोज के ऊपर। ठीक है, बुक ऑफ इनोज का आपने अक्सर साहिल अदीम से सुना होगा, बुक ऑफ इनोज, और वो उसी को पढ़कर वो पोर्टल और इस तरह की साइंसें और वो चीज़ें लिंक विंक मिलाता रहता है। वेल हमें सिर्फ नॉलेज लेनी है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है ताकि जब यूहन्ना निकलेगा दोज़ख से और इसको जब जन्नत अलॉट होगी तो वो इस कुर्रे से, हमारी इस प्लेनेट अर्थ से 13 गुना ज़्यादा बड़ी होगी। अल्लाह ताला ने यौम तबद्दुल अर्द गैरुल अर्द कहा कि वो ये ज़मीन नहीं होगी जहाँ पे सारा वाक़या हो। जिसने हज़रत सुलेमान को कुरान पाक में ये कहा था कि मैं सबा का तख्त लेके आता हूँ, वो दज्जाल ही था। जब एहराम मिस्र बनाने की बात आती है तो साइंस तो नहीं अभी तक एक्सप्लेन कर सकी कि एहराम मिस्र कैसे बने थे। जहन्नुम भी ये खास आसमान के सियारे हैं, मतलब पूरे गुच्छे हैं, कॉन्स्टेलेशन हैं सियारे। जितने इंसानों को जितनी जन्नतें मिलनी है वो उस पूरे के पूरे गल्ब के अंदर, उस जहान के अंदर एक एक सियारा। इस्लाम की हदीस है कि जो आखिरी जन्नती जहन्नुम से सजा पा के जन्नत की तरफ जाएगा वो आखिरी जन्नती होगा कि सब के सब जन्नत में जा चुके हैं। जहन्नुम में भी जो छोटे गुनाह करने वाले से सजाएं पा के जा चुके हैं। ये आखिरी बंदा है जिसका नाम यूहन्ना है। इसके गुनाह काफी थे, ये आखिरी बंदा था जिसने दोज़ख से एग्जिट ले सकता था। उसके बाद जो भी बचेंगे उनको एग्जिट नहीं मिला। ये मतलब लोएस्ट रैंक ऑफ जन्नती है। जब उसके बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया। बूढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान हैं जो जमीन के खुदावन के सामने खड़े हैं, जमीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह घड़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा, उनको मार की मखलूक पाई जाती है और जिसके हवाले से अल्लाह ताला ने अपने आप को रब्बे आलमीन और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा है। तो मेरा अकीदा अचानक से उस तरफ जाने लगता है कि जैसे हिंदुइज्म में जो जन्म की बात की जाती है वो सच है, क्योंकि शायद इसी अर्थ के पैरेलल या एंटी पैरेलल दूसरी गैलेक्सीज के अंदर भी ये सिलसिला चलता रहेगा। एक दुनिया खत्म होगी तो दूसरी दुनिया भी कहीं ना कहीं इस वक्त भी चल रही है और दोबारा भी चलेगी। बहन का लंबा सवाल था। बहन ने पूछा कि हम जानते हैं कि ये अर्थ है प्लैनेट, एक का हर चीज का एंटी पैरेलल है। ये बिल्कुल गलत कह रही है, एंटी पैरेलल नहीं, इट्स मेड इन पैर। आप गलत तर्जुमा कर रहे हैं। कुरान में लिखा है कि हर चीज हमने जोड़ी में बनाई। एंटी पैरेलल हो सकती नहीं हो सकती, गलत आपका तर्जुमा है। कुरान मजीद में कई जगह लिखा है, में आए एक बार आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन है, रहमतुल आलमीन है, बिल्कुल सही। इस दुनिया के आलम हैं, जिनके रहमतुल आलमीन है सबके लिए। हम जानते नहीं कितने आलम। ये कहना कि दुनिया फना होंगी फिर दूसरे आ जाएंगी और हिंदुइज्म के बारे में, बर्थ के बारे में, आप 2 चीज को जोड़ दिए और बिल्कुल गलत कर रही। तो ये कहना कि हिंदुइज्म के अंदर जो बर्थ में मानती, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। आप मेरी अगर कसर सुनेंगे, जिसमें लिखा है और लोगों को कहेंगे कि मैंने कभी भी खुदा बनने का दावा नहीं किया। आपका सवाल है कि अल्लाह ताला कैसे ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रख सकता? ये मौजूदा है। कैसा रख सकता है? कुन फयकुन, हो और हो जाता है।
जो चीज साइंस और हमारी लॉजिक नहीं समझ सकती उसे कहते हैं मिरेकल। कुरान में लिखा है क्या? ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, बिस्मिल्लाह उठा अल्लाह के नाम से। कैसा जान डाली? अल्लाह ने डाली। आप और हम नहीं कर सकते, कोई भी पैगंबर नहीं कर सकता है। बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से उठो और जान आ गई। जान डालना और डिफिकल्ट है क्या जिंदा रखना डिफिकल्ट है? जान डालना और डिफिकल्ट है। कुरान की आयत है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए मुर्दों में जान डाली, लेकिन बिस्मिल्लाह ने अल्लाह के नाम से ईसा अलैहिस्सलाम ने जान डाली। डॉक्टर नाइक वसीला को शिरक मानता है और ये कहता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते, उनको भी कहना कि मुझे दे, बल्कि सीधा अल्लाह से मांगना। और आज ये कह रहा है कि हज़रत ईसा के वसीले से तो अल्लाह को वसीले की ज़रूरत है। आज डॉक्टर नाइक मान गए।